हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टमेंट में स्वागत है। इनकम टैक्स प्लानिंग एंड कैलकुलेशन का ये तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको निवेश के 8 ऐसे विकल्प बताऊंगी जहां निवेश करके आप सेक्शन 80C के तहत रिबेट लेकर अपना इनकम टैक्स कुछ लिमिट तक कम कर पाएंगे। इन विकल्पों को मैंने 4 फैक्टर से सॉर्ट किया है। पहला, रेट ऑफ रिटर्न, दूसरा मैच्योरिटी पीरियड, तीसरा लॉक इन पीरियड और चौथा रिस्क फैक्टर। और इसी के हिसाब से इनकी रैंकिंग दी है नंबर 8 से नंबर 1। नंबर 1 सबसे अच्छा विकल्प है। अगर इस चैप्टर का पहला और दूसरा पार्ट आपने नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया है, वहां क्लिक करके उन दोनों वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं।
stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Cause I wanna be certain we don't have to be lonely.